Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and that is history. Today I am going to deliver its 8th lecture. My dear students, before we move on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So what was the role of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa in the creation of Pakistan? Quickly pause the video and answer the question. Very good. Now let's quickly move forward towards the student learning outcome. So in today's lecture, the students will identify the contributions of provinces in the creation of Pakistan. आज हम सिंध and Balochistan province को discuss करेंगे कि इसका क्या role था in the creation of Pakistan. So let's get started. So refresh your knowledge. Quickly tell me that what do you know about the contribution of Sindh in the creation of Pakistan. Sindh province का क्या contribution था पाकिस्तान की creation में? सिंध में मुसलमानों की सबसे ज्यादा अक्सरियत थी और यहाँ पे वोट भी कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. ये वो इलाका है जो कि सबसे पहले, ये वो प्रोविंस है जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बना था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. पुट योर फिंगर्स वेयर आई विल रीड. सिंध. Sindh also contributed to the creation of Pakistan. It was part of Bombay Presidency during British rule. The Hindus made the Muslims' lives miserable. Therefore, the Muslims of the Sindh realized the importance of the separation of Sindh from Bombay. The All India Muslim League demanded the separation of Sindh from Bombay. In 1935, Sindh was separated. The Sindh supported the idea of a separate homeland, Pakistan, and the Lahore Resolution. The important leaders of Sindh were Ghulam Hussain Hidayatullah, Muhammad Ayub Khoro, Pirzada Abdul Sattar, etc. So my dear students, सिंध ऐसा इलाका था जहाँ के मुसलमानों की अक्सरियत थी और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी. ये बॉम्बे का एक हिस्सा करार दिया गया था और उसके बाद ये हुआ था कि इन्होंने बॉम्बे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी इन 1935. तो ये इलाका सबसे पहले मुसलमानों की अक्सरियत वाला इलाका था जो कि अलहदा हो गया था और इसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया अलाहाबाद के एड्रेस में भी और उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन में भी, एंड दैट्स हाउ दे बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. यहाँ बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने बहुत प्रोमिनेंट रोल्स प्ले किए इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बलोचिस्तान प्रोविंस. Balochistan is important province due to its geographical location. The Afghans, Persian as well as British wanted to rule the province. Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh in his 14 points talked about the rights of the people of Balochistan. The most prominent leader of Balochistan was Qazi Muhammad Isa. He unified the lay of man of Balochistan and together they all supported the creation of Pakistan. Therefore, the heads of the tribes agreed to become the part of Pakistan. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बलूचिस्तान एक बहुत अहम हिस्सा था क्योंकि ये जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन बिफोर पार्टीशन और सब कॉन्टिनेंट में जब ब्रिटिशर्स भी यहाँ रूल करना चाहते थे. इसके अलावा आप अगर देखें तो टाइम टू टाइम पर्शियंस एंड अफगान्स ऑल वांटेड टू टेक ओवर दिस लैंड क्योंकि ये जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कायदे आजम ने भी इसकी अहमियत के ऊपर जो है वो अपने 14 नुकात जो हैं उनमें बात की थी जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट्स हैं. और यहाँ पर काजी ईसा थे, काजी मोहम्मद ईसा, जिन्होंने तमाम, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल सिस्टम था तो तमाम ट्राइब्स के जो हेड्स थे और जो वहाँ के आम लोग थे उन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और जब तमाम जो है इकट्ठे हुए तो दे सपोर्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड दैट्स हाउ बलूचिस्तान बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो प्रोविंसेस हैं ये पाकिस्तान का इस तरीके से हिस्सा बने. इनकी एक पूरी तारीख है, एक हिस्ट्री है जिनमें इनका जो है एक पूरी जिद्दोजहद जिनकी शामिल है और आप सबको जो है इसका एहतराम करना चाहिए. दैट्स हाउ द रिजल्टेंट पाकिस्तान व्हिच वी हैव इज बिकॉज ऑफ द हार्डशिप्स एंड द struggle of these people and the provinces. So my dear students, for the evaluation, quickly tell me that what was the role of Sindh and Balochistan in the creation of Pakistan. They all supported the ideology of Pakistan and voted in the favor of Pakistan. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it at print form by a teacher. Write down your name and your class and then start working. So fill in the blanks. Sindh was the part of Dash during British rule. Sindh was a part of Bombay Presidency. आप यहाँ पे लिखेंगे Bombay Presidency. Bombay Presidency. In Dash, Sindh was separated in 1935. Balochistan is an important province due to its geographical location.
Name the important of Sindh, leaders of Sindh who played an important role in the creation of Pakistan. You can look into your book for this. Who wanted to rule Balochistan province and why Britishers, Afghanis and Persians all wanted to rule this area? Because of its geographical importance. Which important leader unified the tribes of Balochistan? It was Qazi Muhammad Isa who unified the tribes of Balochistan. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will discuss the role of all the provinces in the creation of Pakistan with your parents. So this is your homework. Discussion करनी है आपने just अपने parents को बताइएगा कि किस तरीके से तमाम सूबे जो हैं ये एक जगह इकट्ठे हुए and that's how they became a part of Pakistan. So my dear students, in today's lecture we have discussed about the role of Sindh and Balochistan. और चारों ही सूबे जो हैं इन्होंने अपना अपना role play किया and they created Pakistan. I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.